Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are fine and good. So, welcome to you all in today's video. And today we have discussed about the very important thing. You just say this is also a part of geometry. This is very important for you people. Today we discuss about the angles, okay, and types of angles. First of all, we define what is angle. Then we discuss the types of angles, okay. So, you can see the definition of angle in front of you people, that is angles, okay. An angle is defined as the amount of turn between two rays that share a common endpoint, okay. You can see here, if you, first of all I tell you the what is ray. As you know that yesterday I shared the video about a line and different types of line, and we discussed the ray in detail. Okay, it's okay अगर आपको भूल गया, so I tell you again. Ray has a starting point but no end point, ठीक है. So you can see here 1 and 2. Here are two rays, okay. So angle is defined as the amount of turn between two rays that share a common endpoint. जो इन कॉमन एंड पॉइंट के दरमियान में इनका जो टर्न आता है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एंगल है, ठीक है. एंगल ऑलवेज मेजर इन अ डिग्रीज, ठीक है. व्हेन यू राइट डाउन द एंगल यू हैव टू पुट द डिग्री ऑन इट, ठीक है, उसको मेजर उसमें किया जाता है. ओके. Now, I tell you, okay, you can see the first ray and the second ray. So these rays are known as the arms. Yeah, these are known as the arms. The end point, the meter point of both rays is known as a vertex, and the turn between the two arms or two rays is known as a angles. Okay. So now you can see here, we discuss about the vertex, arms and degrees. Okay. Here we discuss about the vertex, arms and degrees. Okay. So what is arm and what is degree? So the first one is vertex. Okay. The common point where the two rays meet. The common point. You can see the common point. The common point where the two rays meet. This is known as a vertex. Okay. Here is a one ray. Then here is a second ray. So the common point where the two rays meet is known as a vertex. So this point is known as a vertex. Then we discuss about the arms. The rays that make up the angle. Okay. Here you can see first and second two rays are here, na? And these both rays make a एंगल, ठीक है. इनको जब टर्न इनके दरमियान आ रही है, जो ये टर्न हो रहे हैं, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और ये जो ये हमारे पास वन और टू जो रेज हैं, ये इसकी क्या है, आर्म्स है. ओके. यू जस्ट आई जस्ट से कि आप सिंपली इसको ये याद कर सकते हैं कि आर्म्स रेज नोन एज आर्म्स, ठीक है. जो हमारे पास रेज होंगी वो हमारी आर्म्स होंगी, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज डिग्रीज, द मेजर ऑफ द साइज ऑफ एंगल, ठीक है. डिग्रीज हमारे पास क्या है कि जितना ये टर्न हो रहा है, जिसकी मेजरमेंट हम करेंगे, दिस इज नोन एज अ डिग्री. ओके. जितनी ये टर्न हो रहा है एंगल, दिस इज नोन एज अ डिग्री. ओके. सो this is you just say the simplest way to remember these important points about the angles. Okay. So now we discuss about the naming angles. So here you can see the naming angles. First point you have to remember about the angles, that is one way is used to the this symbol. ये angle symbol है, ठीक है. This is known as angle symbol followed by three letters, ठीक है. जब भी हमने एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है, वी ऑलवेज फॉलो द थ्री लेटर्स, ठीक है. द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इंडिकेट्स पॉइंट्स ऑन द टू आर्म्स. यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे ये जो आपके पास ABC है, आप इसको GSL कर दो, एनी पॉइंट, ठीक है. आप कुछ भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जो अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट करोगे, कीप इन वन थिंग इन योर माइंड कि उसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, जो भी आप मिड वाला लेटर होगा वो उसका वर्टेक्स ही होना चाहिए, ठीक है. लेट्स सपोज यू कैन सी हियर इज अ बी, तो आप उसको बी को हमेशा मिड में लिखोगे. अगर यू राइट डाउन द बी इन फर्स्ट और एंड, ठीक है, देन दिस इज नॉट अ यूजफुल, ठीक है. आपके पास ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा. ओके. सो द नेक्स्ट थिंग इज the first and third.
The first and third letter always be indicate, you just say the race और the arms. ठीक है, जो उसकी आर्म्स होंगी वो फर्स्ट और थर्ड लेटर आ जाएगा, और जो मिड हमारे पास होगा, जो वर्टिक होगा, वो हमेशा हमेशा मिड लेटर आ जाएगा. So the letter in the middle is the vertex. As I told you people के इसके पास हमारे पास मिड आ जाएगा vertex के. So you can see here हम इसको represent कर सकते हैं two ways से, that is A B C और C A B. A B C और C B A. ठीक है, the both point have the B in a mid. ठीक है, in middle we have a B. Okay, so naming angle, if you talk about the naming angle, using the special angle symbol, that is the angle symbol only with the vertex point. ठीक है, जो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट होगा उसके साथ जस्ट आप एंगल सैंपल पुट कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा नहीं पुट करेंगे क्योंकि वर्टेक्स से भी हमारे पास एंगल बन रहा होता है. ठीक है, so here you can see B is a vertex point and we have to put the angle symbol. The angle would be called a, yes, ठीक है, हम इसको एंगल B बोलेंगे. ठीक है, we call this angle B by using angle sign or angle symbol following by the letters or number between the angles. ठीक है, let's suppose here is a 1 degree angle. ठीक है, आपके पास ये 1 का एंगल है, so you have to write an angle 1. ठीक है, you can see here is a, you just say best example for you people. If you understand this, तो आपके पास बहुत easy हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि how you can name the angles or how you can measure the angles. So the first one is ABC. Angle ABC is right. Why is this is right? Because A and C, first and third, first and last, ठीक है, is the arms of the angle's name, and the mid of the this B is known as a vertex, or B is we can see कि B हमारे पास क्या है, एंगल का वर्टेक्स है जहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है. So this is the right one. But if we talk about CBA, C A B, तो अब देखिए C तो हमारे पास आ रहा है आर्म्स में. ठीक है, आ रही है, बट A इज नॉट अ वर्टेक्स. टू एंड पॉइंट्स नहीं यहाँ पे मीटअप हो रहा है, तो इधर एंगल बन ही नहीं रहा. तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि वी हैव टू राइट डाउन CBA. ठीक है, लाइक दिस, इफ वी राइट डाउन एंगल CBA, तो दिस इज द राइट वन क्योंकि B हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है और वो मिड में आ रहा है. देन वी हैव अ BCA. BCA, अगेन अब C को हमने कहा कि यहाँ पे एंड पॉइंट मिल रहा है. नो, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे पास रॉन्ग आ जाएगा. इफ यू राइट ऑन एंगल B, यस दिस इज राइट, एंगल 1 दिस इज राइट, क्योंकि हम जो एंगल्स होंगे उनको एंगल साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. If you talk about types of angles or kinds of angle, then you can see right angle. Okay, right angle exactly to 90 degree. Okay, acute angle less than 90 degree, obtuse angle more than 90 degree, and less than 180 degree. I will tell you these things in detail. Just इसे over कर लेते हैं कि what is these angles. ठीक है, a right angle exactly 90 degree, acute angle less than 90 degree, and obtuse angle more than 90 but less than 180. So the next kind, if we talk about next type of angle, that is straight angle, and straight angle is exactly to 180. Reflect angle is more than 180, and full rotation angle is exactly 360 degree. Now we have discussed this thing in detail. Acute angle. You can see the acute angle on your screen, and acute angle is the angle measuring between 0 and 90 degree. ठीक है, हमारे पास वो एंगल जो 0 से 90 डिग्रीज के दरमियान में बनता है, दिस इज एंगल इज नोन एज अ एक्यूट एंगल. ठीक है, हियर यू कैन सी द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट एंगल्स. देखिए 18 डिग्री, 45 डिग्री, 33 डिग्री, 22.5 डिग्री, 7 डिग्री, 88 डिग्री. अगर आप ये देखिए, ये सारे की सारी जो हमारे पास डिग्रीज हैं, ये लेस देन 90 है, एंड yes, more than 0 and less than 90, and that's why we known as this angle as a acute angle. The next one is the obtuse angle, and obtuse angle is the angle measuring between 90 and 180 degree. ठीक है, obtuse angle में क्या है कि हमारे पास measuring angle किस तरह करते हैं, 90 and 180 डिग्री के मिड में. ठीक है, 90 and 180 किस तरह के, 90 से बिगर हो and 180 से स्मॉल हो, more than 90 and less than 180. So the following are the example of obtuse angle, और इसमें example में 135, 93, 174,
डिग्री, 157 डिग्री, 110 डिग्री एंड 117.8 डिग्री। ठीक है, ये डिग्रीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देखिए, यू कैन सी मोर देन 90 हैं but less than 180, and that's why these angles known as a obtuse angle. Then we have a straight angle, or sorry, then we have a right angle. Okay, right angle में हमारे पास क्या होता है, 90 degree, only 90 degree. So now right angle is an angle measuring 90 degrees. Okay, right angle is an angle measuring 90 degrees. The following angles are both right angles. ठीक है, you can see 90 degrees दोनों angles represent कर रहे हैं, तो हमारे पास ये right angles है। ठीक है, now this is your turn. The first question that I want to ask you people, you just see the amount or angle. ठीक है, amount of angle, that is 54. Now you just keep use your mind और उसको सोचेंगे मैंने क्या बताया था, when we have a more than 0 and less than 90, that angle is known as, yes, acute angle. Okay, so the next one is, yes, you can see here 130 degree. Now the angle is greater than 90 but less than 180, known as a, yes, obtuse angle. So the next one is 90 degree. I think this is a too much easy for you people. That is 90 degree, only 90 degree. This no angle is known as a right angle. Good. And the last but not the least, yes, 180. Complete, straight. You just say full angle is 180 दिया गया है. So ये this is known as a straight angle. Good. Here I just want to mention one thing to with you people. Keep one thing in your mind. The sum of angle is 360 डिग्री. जो आपके पास सारे total sum of angles होता है वो 360 होता है. ठीक है. So this is all about today video and today concept. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. If you don't have any kind of question related this topic, you can ask me. ठीक है, you can text me or you just write down in the comment section. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो लाइक करना मत भूलिएगा. लाइक दिस वीडियो, शेयर विद दिस वीडियो विद अदर्स, और अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो प्लीज कीजिए. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए.